Okay. Fine. So what it says that you need to find the integration of, okay, this minus 3 to 3 x cube upon 9 minus x square. Okay, so here what you will see, you will observe here that your limit is going from minus 3 to 3. So in between you have 0. So you know कि ये और ये डिस्टेंस सेम है. कभी भी अगर ये डिस्टेंस सेम होती है तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ये सबसे पहले सोचोगे आप. ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेरा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर है और f ऑफ माइनस एक्स यहाँ पर मैं माइनस एक्स पुट कर दूंगा तो आई विल गेट माइनस एक्स क्यूब. यहाँ पर माइनस एक्स पुट करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इट विल बी 9 माइनस एक्स स्क्वायर. तो मैंने एक चीज यहाँ पर पता कर ली, क्या मैंने ये पता की है कि ये एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर टू एफ ऑफ एक्स है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन जो है दिस इज ए ऑड फंक्शन. सो व्हेनेवर वी हैव ऑड फंक्शन एंड व्हेनेवर वी हैव लिमिट फ्रॉम माइनस 3 to 3, that time the integration will be 0. Got it? So answer for this is 0. Clear? Fine. So in question number 7 also what you did, log of 2 plus sine of x upon 2 minus sine x dx, f of x is equal to this, then f of minus x will be okay, correct? So this is correct, this is okay, perfectly correct. So till this step is perfectly correct, but what you have to prove, you have to prove that f of minus x is equal to minus f of x. So what you will do, you will going to write this as f of minus x, you will going to write minus 1, okay, into minus 1, okay, and then here you will going to write log of 2 minus sine x upon 2 plus sine x. Intentionally you will going to multiply by minus 1 and minus 1. Okay, now you know this minus 1 into minus 1 करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा ना, इसीलिए किया है वो. minus 1 into minus 1 is 1, इसीलिए ऐसा यहाँ किया है. अब मुझे यहाँ पर minus 1 into minus 1 में से एक ही minus 1 चाहिए. ठीक है, I want only this one. ये दूसरा minus 1 की मुझे जरूरत नहीं है, तो इसको क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ ले जाऊंगा ऊपर इधर. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स होल टू द पावर ऑफ माइनस 1. अब होल टू द पावर ऑफ माइनस 1 है तो हम क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे. तो 2 प्लस साइन एक्स जो है वो ऊपर आ जाएगा और 2 माइनस साइन एक्स जो है वो नीचे आ जाएगा. अब आप देखोगे ये जो है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर एफ ऑफ एक्स. So f of minus x is equal to minus f of x. So what this shows, this shows that this is a odd function, and whenever you have odd function and the limit is from minus pi by 2 to pi by 2, okay, इस डोमेन में ये 0 है, ये minus pi by 2 है और ये pi by 2 है, this distance is equal to this distance, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा. So definite integration of this particular question is 0. Clear? Fine. So in question number 8 it says integration I, okay, it's from minus pi by 2 to pi by 2, then function is x plus pi by 4 upon 2 minus cos of 2x dx. Okay, so here again I can say that I need to first find whether this particular function is odd or even function. So before finding this particular function is odd or even function, what I would prefer to divide this function into two different functions. How? Minus pi by 4 to pi by 4 x upon 2 minus cos of 2x dx plus pi by 4, then minus pi by 4 to pi by 4 1 upon, okay, 1 upon 2 minus cos of 2x dx. So this is how I have separated these two functions. Okay, now what I'll do, now since you know that it is pi by 4 and pi by 4, तो क्या टेक्निक अप्लाई करनी है, ये वाली टेक्निक अप्लाई करनी है. क्या है ये है कि आपको
ये फाइंड करना है कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, अलग अलग करूंगे। तो चाहिए तो आप इसको i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 करके भी देख लो, मतलब अलग अलग करके देख लो। सो ये हो जाएगा मेरा i1 is minus pi by 4 to pi by 4 and what is that, this is x ना, ठीक है, x upon 2 minus cos of 2x dx. So here what is my function? Here my function is x upon 2 minus cos of 2x dx. What will you minus f of minus x upon 2 minus cos of 2 into minus x means it is minus cos of 2x, which is nothing but plus cos of 2x. So I will write it as it is. So I have come to know this dx will not come. Okay, so now I have come to know what, that this particular part is nothing but my this function f of x. So I can say f of minus x is equal to minus f of x. So this part I1 is clearly I can write 0. Now let's discuss upon for I2. So what is I2? I2 is dx upon 2 minus cos of 2x, pi by 4 बाहर आएगा. Okay, so I2 is ये pi by 4 बाहर, ठीक है, minus pi by 4 to pi by 4, 1 upon, okay, it is 1 upon 2 minus cos of 2x dx. फाइन. सो ये तो ये फंक्शन नहीं है. कौन सा फंक्शन नहीं है? ये ऑड फंक्शन नहीं है. देखने से ये पता चल रहा है ना, ऑड फंक्शन नहीं है. करेक्ट, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स अगर पुट करूंगा तो इट विल बिकम द सेम फंक्शन. सो दिस इज नॉट ऑड फंक्शन. देन व्हाट इज दिस फंक्शन? लेट्स फाइंड and understand what is this function. Here my f of x is equal to 1 upon 2 minus cos of 2x. F of minus x will be what? 1 upon 2 minus cos of 2x. This will also be cos of 2x. Why? Because this x, if I replace with minus 1, what I will get? I will get minus 2x. And this minus 1x, if I replace this x with minus x, I will get minus 2x. Cos of minus 2x is what? It is cos of 2x only. So I am getting here what? I am getting f of x is equal to f of minus x. It means this function is which function? This function is even function. So whenever you have even function and whenever you have like this is 0, this is minus pi by 4 and this is pi by 4, this distance is equal to this distance, then what you do? You always write like this: minus pi by 4 to pi by 4 f of x dx is equal to 2 integration 0 to pi by 4 f of x dx. This you will going to write when? This you will going to write only if the function is what? Even. So we have proved here that this particular function is even function. Okay, see here we have proved that this particular function is even function. So you can apply this property. Which property? The property name is this. 1 minute, let me write the property name. So property name is minus a upon a f of x is equal to 2 integration 0 to a f of x dx. This dx मैंने नहीं लिखा. Okay, ये this property you will going to apply. Okay, for even function, okay, you have to apply this particular property. Okay, so that's what I will going to do it now. Okay, so here I will going to write pi by 4 is constant taken out. This is 2 integration 0 to pi by 4 1 upon 2 minus cos of 2x dx. Okay, now next step is what? 2 1 ja 2, 2 2 ja 4. So here I will get pi by 2. So here I will get pi by 2 integration 0 to pi by 4 1 upon 2 minus cos of 2x dx. Okay, now tell me what to do. How to find the integration of this? Please tell me. Fine. So this sum, how to solve? Here it says 1 upon 2 plus cos of 2x. So we have studied in the previous chapter that whenever you have, okay, whenever you have to integrate or evaluate the integration of this form, that is 1 upon a sin x plus b cos x plus c dx, we use the standard substitution, that is 10x by 2 is equal to t. क्यों 10x by 2 is equal to t सब्स्टिट्यूट करते हैं? ये यहाँ इन्होंने बताया है और यही चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी.
ओके, रिकॉर्डिंग भी है उसकी, प्रीवियस रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहां मैं आपको वापस सेम चीज बता रहा हूं, ठीक है। यहां आप सब्स्टिट्यूट करोगे क्या, tan ऑफ x इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करोगे, tan x बाय 2 सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे वो आपको मैं अभी बताता हूं। देखो ये tan x इज इक्वल टू t है, x को आप लिखोगे tan इनवर्स ऑफ t, देन फाइंड द डेरिवेटिव। व्हाट इज द डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ t? इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ये एक पार्ट हो गया। ओके, अभी यहां पर देखो, यहां पर cos ऑफ 2x है, तो cos ऑफ 2x का मेरे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? एक है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा कौन सा फॉर्मूला है? दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला कौन सा है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये तीसरा फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर मुझे क्या चाहिए? यहां पर मुझे cos ऑफ 2x को tan ऑफ x के फॉर्म में चाहिए। तो मैं इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा देख लो, cos ऑफ 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, डिनोमिनेटर में क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1। इस 1 को मैं क्या क्या कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूं, मुझे तो tan चाहिए, तो आई विल गोइंग टू डिवाइड बाय cos स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। तो मुझे cos ऑफ 2x यहां से क्या मिल जाएगा? ये तो कैंसिल हो गया, 1 मिल जाएगा। What is sin square x upon cos square x? It is tan square x. And what is my tan x? Tan x is what is my tan x here? I have substituted tan x as t. So I will write here 1 minus t square. Again, this will get cancelled. I will get 1. This is again sin square x upon cos square x is equal to tan square x. And tan x is t. So I will going to write cos of 2x as 1 minus t square upon 1 plus t square. Hope now you have understood. So now I will going to write the same step here. Okay, same this thing I will going to write here. I will going to continue here. Okay, is equal to what? It's equal to pi by 2. Okay, so I'm writing here pi by 2 integration 0 to pi by 4. Okay, so what is my dx? Dx is your, let me change the color. Dx is your dt upon 1 plus t square. Okay, this is my dx. And then in denominator you have 2 minus cos of 2x. What is cos of 2x from here? It is 1 minus t square upon 1 plus t square. Okay, and this will be dt, which I have already written, so no need to write again. Fine. So what is the next step? Next step is you will going to multiply here with 1 plus t square. Again you will going to multiply here with 1 plus t square. Okay, then what you will get? Then this 1 plus t square and this 1 plus t square will get cancelled. Correct? From here this will get cancelled, and finally you will get कुछ दिक्कत नहीं है. So it is learning. We have at least understood कि लिमिट जो है वो हमें चेंज करनी चाहिए थी. कहाँ चेंज करनी चाहिए थी? हमें लिमिट चेंज करनी चाहिए थी यहाँ पे. ये dt, जब आपने यहाँ dt लिखा है तो ये स्टेप जो है, ये स्टेप आपका एक्चुअली सेमी गलत है. क्यों सेमी गलत है? क्योंकि यहाँ आपने dt लिखा है, लेकिन ये जो है आपके लिमिट्स, ये आपने चेंज नहीं किए. ये अभी भी x इज इक्वल टू पाई बाय 4 है और x इज इक्वल टू 0 है, विच इज रॉन्ग. तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा. तो मैं इसको चेंज अभी करता हूँ. पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 to 4 नहीं आएगा, ये dt आएगा. डिनोमिनेटर में आपका dt √3 बाई टी द होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा. दिस इज फाइन. लेकिन ये जो लिमिट है, ये लिमिट चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो when x is equal to 0, what will be your t? आपका t क्या था? आपका t यहां पर था, क्या था? t कहां गया t? हाँ, t 10x था, 10x. ठीक है, तो आप यहां लिखोगे 10x, which is tan 0. What is tan 0? Tan 0 is 0. And when x is equal to pi by 4, then what will be t? t will be 10 pi by 4, which is 1. तो ये आपसे, मतलब मुझसे ये गलती हुई थी. ठीक है, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा. तो ये आप लिखोगे 0 और यहाँ आप लिखोगे 1. अब आपको आंसर सही आएगा. तो ये जो कुछ भी यहाँ पर किया था मैंने, ये स्टेप, दैट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट.
यू कैन इग्नोर दिस, ठीक है। ये जो स्टेप है ये पूरा जो है यू कैन इग्नोर इट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज मतलब दिस इज actually not correct. Why it's not correct? Because of that limit. Because of that limit it's not correct, otherwise that step is also correct. And from this step only I took root 3t the whole square plus 1 square. Okay, so this is your 1 square. तो इसका आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, क्या है वो बताओ, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज 1 अपॉन a tan inverse x upon a. This is that formula. So same formula you will going to apply here. So I will going to write 1 upon a. A is 1, so I am not writing. Then immediately tan inverse x upon a. What is x? X is root 3 or root 3 2 upon a. A is 1, so I am not writing. Okay, so this is what is done. And then your limit is from 0 to 1. Fine. So what is the next answer? Next step is what? Pi by 2 tan inverse upper limit or root 3 minus tan inverse lower limit, which is 0. So this will be 0 only. So pi by 2. What is tan inverse of root 3? Tan inverse of root 3 is your tan inverse of root 3. Tan 60 is what? Tan 60. Tan 60 is root 3. So tan inverse of root 3 will be what? 60. When I say 60, it is what? It is root 3 by pi by root 3. So this is pi by root 3 and this will be 0. Okay, pi by root 3 and this will be tan inverse of 1. 1 minute, some mistake again. Fine. So I did a small mistake here. What is the mistake? ठीक है, मैंने फॉर्मूला तो लगा दिया यहाँ पर, राइट? फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन ये मेरा क्या है? ये मेरा x नहीं है, ना ही ये मेरा t है। क्या है ये रूट 3t है। तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? रूट 3 से, तब जाके ये मेरा आंसर सही आएगा। सिमिलरली ये रूट 3 जो है यहाँ आएगा, सिमिलरली ये रूट 3 मेरा यहाँ आएगा। अब आंसर सही है। पाई इंटू पाई इज पाई स्क्वायर एंड 2 इंटू 3 इज 6 एंड 6 रूट 3। तो पाई स्क्वायर अपॉन 6 रूट 3 विल बी माय फाइनल आंसर। तो मतलब अवॉइड करना ये जो मिस्टेक जो हुई है। सबसे पहली मिस्टेक क्या हुई थी? मतलब इट इज अ लर्निंग, ओके, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, ओके। मेरे से गलती हो रही है तो ऑब्वियसली आपसे भी गलती होगी ही होगी। तो सबसे पहली मिस्टेक जो सब करते हैं, मैंने भी कर दी अभी, क्या है वो कि आपने सब्स्टिट्यूट तो कर दिया लेकिन आपने लिमिट चेंज नहीं की। तो ये सिली मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड मिस्टेक क्या है? सेकंड मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने इंटीग्रेशन तो निकाल दिया, राइट? इंटीग्रेशन मैंने इसका निकाल दिया, लेकिन फाइनल इंटीग्रेशन निकालते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये इसका कोएफिशिएंट जो है वो रूट 3 है, तो मुझे उसको डिवाइड करना है। Okay, so these two was a mistakes which I made, but I request you not to make this. Take this as positive point and avoid making such mistakes. Okay, so your final answer is what? Pi square upon 6 root 3 is your final answer. Clear? Fine. So let me solve question number 10. Question number 9 you have solved perfectly correct. That is 0. Why? Because that was a odd function. Now here what you will do, question number 10, it says from 0 to 1 log of x plus 1 upon x square plus 1 dx. 0 to 1, whenever you have limit 0 to 1, what you will going to think? You will going to think कि ये जो x जो है इसको मैं रिप्लेस करती हूँ 1 माइनस एक्स के साथ और देखती हूँ आंसर सही आएगा या नहीं आएगा। तो अगर मैंने किया इसको ऐसा, इसको मैंने x को लिख दिया मैंने 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1 ऐसा किया, तो दिस एंड दिस कैंसल, लॉग ऑफ माइनस एक्स। log of minus x is not defined, तो ये अप्रोच मेरा गलत है। I have to change my approach. What will be my next approach? Next approach will be, ये फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि दिस इज f of x इज इक्वल टू g of x अपॉन h of x, ठीक है ना, इस फॉर्म में है। मुझे इसको छोटा बनाना है, मतलब मुझे इस f of x को ये रैशनल फॉर्म में नहीं, मुझे एक सिंपल सा लीनियर फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा? उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप सोचना पड़ेगा। क्या सोचूं? कब आप देखो यहाँ पर, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है डिनोमिनेटर में, और एक आप एक चीज देखो, क्या न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेड्यूस्ड फॉर्म में नहीं होगा,
तो रेड्यूस फॉर्म में लाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा जिससे ये छोटा हो जाए। तो हमने देखा था ये क्या कि सब्स्टिट्यूशन अगर कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में होता है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम करते हैं एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट। क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 6 स्क्वायर होता है, और ये dx जो है इसको हम लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ 10 इज योर 6 स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, तो मुझे एक चीज यहां पर पता चल गई है, क्या पता ये चल गई है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये तो मैं लिख दूंगा लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 को टेन थीटा प्लस 1, ये मेरा कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और dx क्या है, dx है मेरा 6 स्क्वायर थीटा d theta. This is my dx. Okay, now limit also I need to change. So when x is equal to 0, what will be theta? Theta will be tan inverse of x. It means tan inverse of 0, which is nothing but 0. And when x is equal to 1, then what will be the theta? Theta will be tan inverse of 1, and that is nothing but pi by 4. So I will going to write this limit as 0, and here I will going to write pi by 4. Now you know one thing, what is that? Tan square theta plus 1 is 6 square theta. You know this formula, na? Tan square theta plus 1 is 6 square theta. Now this 6 square theta and this 6 square theta will get cancelled, and then your function will be reduced to only log of 10x plus 1 d theta. Okay. Okay, now what to do, how you are going to solve next one? Tell me what will be your next step. Okay, so what you said is perfectly correct. We will going to apply this sixth property, that is 0 to a f of x dx equal to 0 to a f of a minus x. ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस दिस, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस दिस ना, और फर्दर रिड्यूस कर रहा हूं मैं। ओके, आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आई एम यूजिंग। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या करते, तो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, u इंटू वी करते हैं और वो आता ही नहीं, 1 प्लस 10x लॉग ऑफ 1 प्लस 10x, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, नहीं कर पाते आप ये, राइट। तो आप अभी क्या करोगे, आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे। तो प्रॉपर्टी आपने यूज की तो क्या मिलेगा, सो दिस इज i, हियर i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4, ठीक है, लॉग ऑफ, ये आप लिखोगे tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस 1 and then here d theta. Now this tan pi by 4 minus theta, this you will going to try to solve. Tell me what is tan pi by 4 not plus theta, this is minus theta. Tell me what tan pi by 4 minus theta is. You know the formula, what tan a minus tan b formula, you know what is that, it is tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b. So using that formula you will going to write tan of pi by 4 minus theta will be tan pi by 4 will be 1, so I am writing 1 minus tan theta I am writing, then here my 1 plus tan theta I will going to write. So I will get what, 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta, but here 1 is also there, so what I will do, I will going to add 1 here and I will going to add 1 here. So when I'm adding this 1, what I will get, 1 minus tan theta plus 1 plus tan theta upon 1 plus tan theta you will get. So this and this is cancelled, and finally you will get 2. Okay, 2 divided by 1 plus tan theta, that's what you will going to get, and the same thing you will going to substitute here. Okay, so here I is 0 to pi by 4, this I have calculated, and that is coming to 2 upon 1 plus tan theta, that's what I am getting it. Okay, log of 2 and this d theta, so you can call this as equation number 2. So equation number 1 is my where is that equation number 1, this is equation number 1, I have not made, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करूं मैं, ये भी लॉग ऑफ समथिंग है, नीचे 1 प्लस tan थीटा है, यहाँ भी 1 प्लस tan थीटा है, राइट। सो आई विल डू व्हाट, आई विल डू ऐड, आई विल डू
addition I will do. Okay, so I will get 2i is equal to integration 0 to pi by 4 log of, what is that, log of tan theta plus 1. So I will write here tan theta plus 1, and here again I am adding it, so it will be log of 2 upon, okay, 2 upon 1 plus tan theta, ये पूरा d theta. Now here next I will going to apply the property. Which property? Law, logarithm, not property, logarithm law. Log a plus log b is log of a into b. So here tan a into 2 upon 1 plus this. ठीक है, tan theta plus 1, नीचे भी tan theta plus 1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, and then this d theta. Okay, now what is this log 2? This log 2 is constant, so this constant you can take out, and then integration 0 to pi by 4 d theta. Okay, then that is nothing but log of 2. This is what? This is only theta, and limit will be from 0 to pi by 4. Now you can apply the limits. 2i is equal to log of 2, upper limit is pi by 4 and lower limit is 0. Here what I need to do is, after this 2i is equal to log of 2, this log of 2 is a constant, ठीक है, ये अलग है, और ये जो है ये अलग है, ये दोनों भी सेम नहीं है, ठीक है, तो you cannot make this 2 into pi by 4, that is wrong. So this will be pi by 4 log 2. Got it? This will be pi by 4 log 2. You cannot multiply 2 and pi by 4. They are separate. Fine. So my next step will be what? My next step I will be pi by 8 log 2. This will be my final answer. Okay. Fine. Yes, sir. Yeah. So, okay. So what it says that integration from -1 to 1 x cube plus 2 upon square root of x square plus 4. ठीक है, लिमिट आपका -1 to 1 है, तो क्या करोगे, इसको देखोगे आप, ये फंक्शन ऑड है या इवन है. आपने देखा कि ये सेपरेटेबल हो सकता है, तो आपने इसको सेपरेट कर दिया, ये अलग किया, ये अलग किया. फाइन. तो ये I1 आपने ये माना और 2I2 आपने ये माना, बिल्कुल सही है. तो लेट f of x इज इक्वल टू दिस. चलो ठीक है, ये आपने एक f of x मान लिया. f of माइनस x जो है वो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 है. ठीक है, बिल्कुल सही है, ये सही है. यहाँ पर माइनस चाहिए इधर, ये माइनस नहीं लिखा है. ठीक है, दिस स्टेप इज परफेक्टली करेक्ट. सो यू गॉट f of माइनस x इज इक्वल टू माइनस f of x. तो f of x इज ए ऑड फंक्शन. सो इसका जो I1 जो इंटीग्रेशन मिलेगा that will be 0. This is perfectly correct. Now why you have not solved this I2 part? You need to solve I is equal to I1 plus, नहीं I1 नहीं, अब ये I1 की जगह 0 पुट कर दूंगा मैं, राइट. 0 plus 2I2. So you have to solve what? You have to solve this part, that I is equal to, now it is 2 integration -1 to 1 upon square root of x square plus 4 dx. This is what you have to solve now. So can you do this? Okay, so what you have done is perfectly correct. Okay, so this I, you have tried this I to know whether this particular function, this I function, is even or odd, and you have found that this particular function f of x is a even function. So whenever you have even function, what you will do, tell me. So this is correct. So whenever you have even function, what you will do, you will convert this limit. It is from minus a to a f of x dx equal to 2 integration 0 to a f of x dx. So equal to 2, this 2 is this 2, and this limit from 0 to 1, and you will going to multiply by 2 here, right, because of this. Okay, why? Because this is a even function. And then square root of x square plus 2 square dx. Next, what you are going to do, you will going to apply the formula. So next step, what you did, you applied this particular formula, that is integration of dx upon
root of x square plus a square, which is log of x plus root of x square plus a square, and then you got, okay, then you got this, and then limit you have applied from 0 to, limit is from 0 to 1, correct? So this is 0 and this is 1, perfectly correct. And then you have substituted the values of this upper limit 1 over here. 2 square is 4 plus 1 square is 5, then minus log of, this is 0 and this is 0, so it is log of log of 2 square is 2. So this is what is the perfectly correct answer. Okay, got it. Okay, let's start next question. Fine. So what you have done, question number 12, integration minus a to a x plus x cube upon 16 minus x square dx. So since the limit is from minus a to a, you will always try to find whether this function is even or odd, and you have found that this particular function as odd function. So whenever this function is odd function, so what you'll do, you'll directly write this answer as 0. So this is the perfectly correct answer. Okay, let's